हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइव स्ट्रीम। और भाई अभी आज हमारा मैच जो है भाई हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है सबसे पहली बात तो। और भाई इंडिया का स्क्वाड रहने वाला है जो यूजुअली अब इंडिया का रहता है, T20 स्क्वाड, जिसकी कप्तानी करेंगे भाई सूर्य कुमार यादव। Good morning to all. We're here at the Rajiv Gandhi International. चलो भाई टॉस उछाल दिया गया है। You really had to bowl first here. The pitch is offering next to nothing for the batters. So here we go. The players चलो make भाई their way out to a seismic crowd. पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी यहाँ पर अर्शदीप सिंह पहला बॉल। अरे भाई बहुत ही बेहतरीन बॉल। और भाई जिसने भी अभी तक लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. ये बेहतरीन शॉट था इससे पहले। अर्शदीप सिंह यहाँ पर बढ़िया गेंदबाज, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, राउंड द विकेट आते हुए। अगला गेंद Thick edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. के बीच बढ़िया बॉल, एक और बार आसान नहीं होगा।
First over gone, and a respectable start by the batters. Going with pace now. Jasprit Bumrah, the champion. Yo, क्या हाल है ब्रदर? Was quick onto that in the infield. Cuts that off well in the infield. End of the over. 3 runs coming off it. Pakistan are 8 for none. Another good over by the bowlers. Bowled to their field well and mixed their deliveries nicely. Singh from the VVS Laxman end. Oh, that's a great shot early on. Wide of cover. And that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Pulled away and into the gap. Could be 4 more. You just can't give them that much width. You bowl out there and you get what you deserve. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Massive outside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Drive straight down the ground, mid-on, and collect that one though. Misses everything. Singh has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards.
perfectly timed. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. ये जिसने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो प्लीज चैनल Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep control and find the boundary. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Does very well to quickly get across to this one. The big one, 12 runs out of there. Pakistan, 30 for none. Yadav, the left arm unorthodox bowler, is coming into the attack from the VVS Laxman end. India with a massive shout. Oh, that's LBW. Starts the over with a wicket. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Brilliant diving stop. Huge edge. Finds the fielder with that shot. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket.
Abdullah taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Massive appeal. Might have just been missing though. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. Patel, the spinner, coming into the attack. Didn't like the look of that one and just ignored it. Left alone and easily through to the keeper. Dives and takes a nice catch. And gone. That's a fantastic catch. Not a bad innings, was really starting to up the run rate, but cut short, a really important wicket to get at this stage of the match. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. Swept away but finds the fielder. Can't get that outside the ring field. India managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. 3 more fielders can be moved outside the circle. Yadav from the VVS Laxman end. Nice shot, just a flick off the pads. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Look to have pitch in line and hitting live. We'll see what Big Eye shows in the review. Now, I didn't pick up on anything there. Very close to the bat, though. Was there a bat on it? Fielders think there was. This could be trouble. Yeah, not the best of reviews there. Great call by the umpire, though. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. He's got their tail up. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up
and getting them onto the front foot. Good fielding out in the boundary. Worked away, that's a nice single. Great shot, through the gap. Really good over, takes a wicket and keeps it tight. Somehow they've got to find some boundaries. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Collects that one, simple as you like inside the ring. Great shot, he's pulled that one away, 4 more. Got it away for 4, backward of point very nicely. Patel shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Square cut, finds point, no run. India managed to keep the batters pretty quiet in that over. We're certainly seeing some very good bowling. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. Yada from the VVS Laxman end. Nice shot, runs possible, doesn't beat the infield. Couldn't get it through the field.
massive appeal. Might have just been missing though. That's the end of the over. 2 runs added. Pakistan 49 for 5. Pandya comes back into the attack. The runs have slowed. They're a good option to continue tying these batters down. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Yeah, too wide. It was there to be hit, and it was really given the treatment. End of the over. And a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. The right armour is coming into the attack from the VVS Laxman end. Over the infield with a cracking shot. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. Too much width, really. They're only asking for that to be hammered into the stands, and that is exactly what's happened. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Straight to the fielder. Finds the edge.
End of the over, a big one. 11 runs coming from it. Pakistan, 68 for 5. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. Starting to hit their stride. Fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Going a long way. What a shot. Well, that ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. Yadav, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Does very well to quickly get across to this one. Great shorter ball. Well played, though. Didn't flinch and was able to leave the ball comfortably. That's the end of the short stuff for this over. Perfectly timed. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. 13 runs added there. Pakistan are 81 for 5. The right arm pace bowler is coming into the attack from the VVS Laxman end. Big edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Square cut, finds point, no run. Cuts that off well in the infield. End of the over. 4 off it.
Pakistan are 85 for 5. Runs have been at a premium this middle portion of the match. Patel has been going really well here. Comes back on from the Shivyal Yadav end. And that brings up the 50 partnership for these two. Edged, what a ball. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Six of your finest, please. Cover drive for a maximum. Brilliant. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. 10 runs added there. Pakistan are 95 for 5. Didn't like the look of that one and just ignored it. Finds the edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Well, now that could be out. Out of the ground. That's a tremendous shot. Just sailed away. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Crack. It's another massive maximum. 2 in a row. Bowler under pressure now. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft it over the boundary rope. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Big edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. No, no, no. Terrible shot. Really playing all their shots that over. Very expensive. Patel from the Shivyal Yadav end.
Gone. Superb catch. Out. Nicely done by the keeper. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings, but all the same, it's been fabulous to watch. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Finds the fielder with that shot. Nicked it. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Gone. Fine catch. That was a very good knock in the end. I'm sure a few more runs would have been better, but this has been a good innings. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Misses everything. Square cut, finds point, no run. End of the over, just one off it. Pakistan, 110 for 7. Runs have been at a premium this middle portion of the match. Bumrah into the attack now from the VVS Laxman end. Wow, that's missed the lot. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Goes over the top with that shot. Doesn't beat the infield. रंजीत भाई क्या हाल चाल? Good pick up, big chance.
Beats the outside edge. Good bowling there. Good bowling. Kept it nice and tight and made it hard to score. Singh coming back on here. They've been bowling really well so far. Was quick onto that in the infield. Thick edge. Massive outside edge. Singh ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Can't afford too many dot balls at this stage. Need to find a way to ramp up the run rate. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Oh, wow. Brilliant reactions, and what a catch. And out. Oh, how did he get to that one? Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. With 4 of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that one, though.
Bumrah getting a wicket in that over. Really good bowling. There wasn't much on offer for the batters. Singh to bowl the last over. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. Can't get that outside the ring field. Great shot. Just stepped inside the line and flick of the wrist, and that'll run out to the boundary. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to find something to make up for the rest of the batting team's failures. Well, dealt with that beautifully. Saw the short one and got out of the way. No more of those in this over. Straight to the fielder. Thick edge. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure.
I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. End of the over. 3 runs coming off it. India are 3 for none. Ralph coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Oh, that's a great shot early on, wide of cover. And that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Ralph shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Smacks that away through the gap. Sampson waited on that and guides it down to third. Fielder coming around, may stop it before the boundary. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Brilliant diving stop. Power and precision in that shot. End of the over, 10 off it. India, 13 for none. Afridi from the VVS Laxman end. Couldn't get it through the field. Perfectly timed. Sharma got it into the gap and the ball did the rest. Brilliant shot. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Finds the fielder with that shot. Gone. Great catch. Quick reactions. Super catch. The first wicket's down. Back to the pavilion and disappointment is etched on their face. Can't believe they got out like that. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Pulled away and into the gap. Could be 4 more.
That showed great skill and lovely timing. The boundary was the only place it was heading. Got that one clean out of the middle. 4 off a brilliant shot. Azam, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Top edge and just over the keeper. Might have been a little bit late reacting, but the ball runs away to the rope. The big one, 12 runs out of there. India, 25 for 1. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Square cut, finds point, no run. Collects that one, simple as you like inside the ring. Cuts that off well in the infield. Out. Caught. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. What a crucial breakthrough this is. Excellent bowling to get one of the key wickets cheaply. Lots of pressure coming into bat. They'll have to wait just a little bit longer to face their first ball, though. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Great shot through the gap. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Nice shot, straight to gully. Massive outside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Was quick onto that in the infield. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. Ralph from the Shivyal Yadav end.
ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Doesn't beat the infield. They've gone up here. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you'd expect from someone of this skill level. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. Ahmed, the right armour, is coming into the attack from the VVS Laxman end. Square cut, finds point, no run. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Power and precision in that shot. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. How will he reply? Pulled away, but straight to square leg.
Gone, knocked them over, just too much pace there. It's another wicket, it's the fourth now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about a delivery. The new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. Five runs added there. India are 45 for 4. Ahmed from the VVS Laxman end. Perfectly timed. Over the infield with a cracking shot. Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Drive straight down the ground, mid-on, and collect that one though. Finds the edge. Pakistan with a strong appeal. That should be given. Gone. Fine catch. The batsman leaving the field, caught behind for 10. India are now on 48 for 5. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. The right armour is coming on to bowl from the Shivyal Yadav end. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep with some serious work to cut it off. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. The whole team's going up here. What's the umpire going to say? Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone, there's not a lot left in this lineup.
Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Pulled away, but straight to square leg. Patel ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Bowler and the slips have really gone up here. They like it. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. First ball for the batter, coming in. Great shot. Gets a hold of that and places it through square leg. Pakistan needs this sort of rhythm to be maintained. A good over. Couldn't get it through the field. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Bowler and fielders look really confident. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. Got on the inside and played that wonderfully. Fielder needs to work hard to stop that. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. It's a nice sweep shot, but finds the fielder at square leg. Nice shot, just a flick off the pads. This is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary.
Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. End of the over, and it's a good one for the bowling side, not letting the batters build any momentum. Ahmed from the VVS Laxman end. That's a strong appeal. What's the umpire's decision? Onto the front foot, super shot, should be four. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Does very well to quickly get across to this one. Beats the field with a great shot. Nicely fielded out deep on the boundary. Beautiful catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. That's number 9 down. The bowling's been good so far. The 10th shouldn't be too long in coming, you'd think. The right arm medium bowler is coming into the attack from the Shivyal Yadav end. Chakravarti taking guard, has been playing really well in recent matches, certainly needs to bring their A game today. Massive outside edge. He's got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. Finds the fielder with that shot. Thick edge.
Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match. The new bowler is coming into the attack. No, no, no. Terrible shot. Beats the outside edge. Good bowling there. Power and precision in that shot. The timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. It was a boundary the moment it hit the bat. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Chance to run two. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. Shah from the Shivyal Yadav end. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Wow, that's missed a lot. End of the over. 3 runs coming off it. India are 86 for 9.
misses everything. Flex that one, simple as you like inside the ring. That's the over and quite possibly the match. Good bowling to put a lot of pressure on the batters. Seems to have misjudged that one. Ouch. Nearly gets the edge. Shah with a great delivery there. Nicely played. Runs one. He's quick onto that in the infield. The batter's made a bit of a meal of that delivery. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Winds up but misses. Looks like they went a bit too early on that shot. Chance to run two. Doesn't beat the infield. Trouble. Pakistan needs this sort of rhythm to be maintained. A good over. It was full and good night. Hit it well to pick up four. Afridi, the left-arm medium-fast bowler, is coming into the attack from the VVS Laxman end. Square cut, finds point, no run. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Good shot, beauty. All the way, got it right out of the middle. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. That's a solid shot. Gone, great catch, safe pair of hands to get the win. Pakistan get the final wicket. A brilliant bowl.
तो चलिए गाइस, खेलते हैं अगला मैच, जो कि क्विक मैच खेलेंगे पहली तो। इंडिया सेम ड्रेस ठीक है, और इंग्लैंड क्योंकि अभी चल रहा है आजकल, तो टेस्ट ना खेल के भाई हम खेलेंगे छोटा फॉर्मेट। इसको कर लेते हैं हार्ड। कमेंट्री कमेंट्री में आकाश चोपड़ा। नहीं, डैनी मॉरिसन तो नहीं चाहिए हमें, आकाश चोपड़ा सही है भाई। ठीक है। तिलक वर्मा की जगह वही हमारे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह आएंगे। मयंक यादव की जगह रवि बिश्नोई की जगह आएंगे हर्षित राणा। अक्षर पटेल को भी बाहर करके भाई हम लेंगे शड्डू को। नीतीश कुमार रेड्डी भी बाहर जाएंगे, और इस मैच में अंदर आएंगे हार्दिक पांड्या, जो कि होने वाले हैं भाई कैप्टन। अच्छा, नीतीश कुमार रेड्डी के बदले यार हम्म, ठीक है वैसे। चलो के एल राहुल कर लेते हैं भाई। भाई इतने सारे विकेट कीपर हो रखे हैं, इसलिए सैमसन को हटा के हम लेके आएंगे भाई अपना मोटू। कहाँ है? रो सुपर हिट शर्मा। चलो भाई, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, खिला लो भाई जो खिलाना है। ब्राइट सनी डे, क्रिकेट के खेल के लिए बढ़िया समय। Looks a hard, bouncy surface here. The ball should bounce a bit, but also come nicely onto the bat, so both sides should enjoy this. Both the captains with the match referee are out here in the middle. और भाई हम हार चुके हैं टॉस आज के मुकाबले के लिए ये रही टीम्स, दोनों तरफ बहुत ही होनहार खिलाड़ी। मजा आएगा आज। चलो भाई। Ladies and gents, please stand up for the national anthems. चलो भाई, म्यूजिक हमने ऑलरेडी हटा दिया था इससे। रोहित शर्मा ओपन यशस्वी जायसवाल के साथ। शुरुआत हो गई क्रिकेट की, दर्शकों की भीड़ भी भारी है, विरोधी भी बजाएंगे तालियां, जमकर खेलने की तैयारी है। दो सलामी बल्लेबाज पिच की ओर बढ़ते हुए, रफ्तार से मुलाकात होगी तेज गेंदबाज अटैक में। अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार। तगड़ा शॉट, कॉन्फिडेंस से भरपूर। इनके आंखों और हाथों का तालमेल लाजवाब है। एक सेकंड भाई, इस ऑडियो थोड़ा सा ये और थोड़ा सा बढ़ाए जा सकते हैं ऐसे। चलो भाई।
काफी अच्छी लय में लग रहे हैं बल्लेबाज आज। गैप में खेला और 1 रन चुरा लिया। अच्छा तालमेल दिखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। शानदार गेम और उसको जाने दिया। बढ़िया लीव। उम्दा टाइमिंग थी इस शॉट में और निश्चित था कि यह गेंद सीधा बाहर जाएगी। तोड़ दिया है भाई। बेहतरीन अंदाज में दिख रहे हैं आज ये। पहला बॉल काफी अच्छा करा था जोफ्रा ने। सकारात्मक फील्ड सजाई है कप्तान ने। अच्छी कप्तानी। एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी। और गाइस, जिसने भी अभी तक लाइव स्ट्रीम को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइव स्ट्रीम को लाइक करना ना भूलें। जल्दी से कंप्लीट किया 1 रन। इस पिच पर एक धीमी गति की गेंद जरूर आजमानी चाहिए। छह रन मिलेंगे। बाजुए खोली और दिखाया अपना जलवा। जबरदस्त शॉट। आत्मविश्वास से भरा शॉट था ये। समझदारी के साथ मैदान के छोटे हिस्से में खेला ये शॉट। बढ़िया बल्लेबाजी। हेलो 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 ब्रो, क्या चाल है? गैप में खेला और 1 रन चुरा लिया। ये बढ़िया था भाई। तो गाइस, जिसने भी अभी तक लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। खेल दिया है गैप में। दूसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे। बढ़िया 2 रन यहाँ पर। क्या हाल चाल भाई सभी के? एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बढ़िया शॉट पर सीधा फील्डर के पास गई है गेंद। और ये हवाई फायर और दर्शकों को किया है फील्डर्स में तब्दील। भाई रोहित शर्मा हो और छोटा बॉल करो भाई, ये तो बेवकूफी है भाई। रोहित शर्मा ने मार दिया है 6। बहुत लंबा 6। मिलेगा खूबसूरत चौका। उम्दा टाइमिंग के साथ गेंद को गैप में ढकेला। एक के बाद एक लगातार बढ़िया शॉट यहाँ पर चलते हुए।
बल्लेबाज का आत्मविश्वास इस शॉट से और भी बढ़ेगा। चलिए भाई, नया ओवर लेके आए हैं क्रिस वोक्स। बल्लेबाज लय में, विपक्षी भय में। गेंदबाज की शानदार अपील और ये आउट। अपने पसंदीदा अंदाज से इस सफलता का जश्न मना रहे हैं गेंदबाज। एज लगा, कट करने गए थे और सीधे कीपर अब आ चुके हैं भाई विराट कोहली। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल के रहना यारों, ये इम्तिहानों का दौर है। हेलो भैया, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बस ये इनका पता नहीं कहीं कहीं भी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा दिखाई दे रहा है। फीस कर देते हैं बस ये। ओए भाई, बढ़िया जी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया। लो भाई, उम्दा टाइमिंग थी इस शॉट में और निश्चित था कि यह गेंद सीधा बाहर जाएगी। आमंत्रण को किया था स्वीकार और गेंद को भेजा बाउंड्री पार। भैया मुझे इतना तो याद नहीं है, बट ये हाँ गाना तो है ये। ओए भाई, सीधी सीधी पैड पे मार दी बे। तो गाइस, जिसने भी अभी तक लाइव स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भाई सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओए नहीं गैप में खेला और एक रन चुरा लिया। नहीं, बच गया भाई, अभी काम हो गया था। लाइक डन, सब्सक्राइब डन, थैंक्स अ लॉट भैया। स्पिनर आए हैं गेंदबाजी के लिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। पावर प्ले की हो चुकी है समाप्ति, यानी अब 2 से अधिक फील्डर्स 30 गज के घेरे के बाहर रह सकते हैं। गैप में खेला और एक रन चुरा लिया। सिंगल चोरी, डायरेक्ट हिट, बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से किया यह थ्रो, सीधा स्टंप्स पर। मैं भी हार से खेलता हूँ पर नॉर्मल वाला, क्योंकि स्वाइप कंट्रोल तो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। हाँ ना, बट मतलब मैं तो पीसी में खेल रहा हूँ ना, थोड़ा सा तो। एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी। मैं नया ट्राई कर रहा हूँ भैया, मतलब मैं ज्यादा टाइम अच्छा थ्रो फील्डर का, तेज और बिल्कुल ठिकाने पर। आरसी गेम्स खेलते हुए वैसे मैं क्रिकेट 24 खेलता था। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही दृष्टिकोणों से पिच अभी तक काफी बैलेंस लग रही है। जल्दी से कंप्लीट किया एक रन।
हाँ वही वही वही, इसी में फिर भी बेटर है। ठीक है भाई, कुछ कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मिल गई विकेट। वाह, किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाड़ी ने। ऐसा लगा मानो बिजली की रफ्तार है इनके पास। उस टाइम प्री रिकॉर्ड, हाँ भैया। पेविलियन की ओर लौटना पड़ेगा। नाखुश, मायूस, नाराज, निराश बल्लेबाज। सुबह वही वाला रहता है ना, सुबह वहाँ प्रैक्टिस जाना होता है। हाँ, टाइमिंग उतना खास था नहीं भाई शॉट में, और सीधा सीधा भाई दे दिए हाथ पे। भैया बैट्समैन बताइए किसको लाया जाए? सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल। मेरे हिसाब से तो केएल विल बी बेटर ऑप्शन, या सूर्य कुमार यादव। एचपी, अच्छा चलिए भाई एचपी, हार्दिक पांड्या को लाया जाएगा भाई। अब बड़े शॉट्स मारने से पहले बल्लेबाज को पिच पर थोड़ा समय बिताना होगा। बल्लेबाज बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं दिखे इस गेंद पर। बढ़िया गेंदबाजी। तेज भागे और एक रन अपने खाते में जोड़ लिया। था, फिर वहां से आपकी स्विंग पे आ गया। स्टंप्स के बहुत करीब है ये थ्रो। बढ़िया फील्डिंग भैया, थैंक्स अ लॉट। इट मैटर्स, काफी मैटर करता है भैया ये सब। वैसे भैया भी अपने ही है, वहां देखो यहाँ देखो, बात बराबर ही है। स्पिन गेंदबाज को आक्रमण में वापस लाया गया है। बट भैया का ज्यादा अच्छा चल रहा है ना अभी, तो मुझे ज्यादा जरूरत है। हाय, बहुत बढ़िया फील्डिंग। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन्स बचाए। खूबसूरत थ्रो, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर। ओके, बल्लेबाज के लिए कोई भी आसान रन अवेलेबल नहीं है। मजा आता है ऐसी फील्डिंग देखकर। अरे मतलब मुझे ये लगा था कि आप मतलब काफी मैंने मतलब देखा है ना आप भैया की लाइव स्ट्रीम में आपको। हवा में गेंद, तो मुझे लगा क्या पता तो 19 जो यूज हो जाता है। हाँ भैया, वो तो बढ़िया चल रहे हैं, खड़ा कुंदा एकदम। तो गाइस, जिसने भी लाइव स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हम पर थोड़ी सी कृपा बरसाएं। ये बढ़िया शॉट, दमदार शॉट, और ये छक्का, छक्के छुड़ाने वाला छक्का। उनकी मर्जी को बेटा उनसे पूछा अगर वो किसी हर्षित को जानते हैं दिल्ली से। अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, कल पूछा जाएगा। कल हम सुबह फिर से लाइव आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि अगली गेंद कहां डालेंगे गेंदबाज। गैप में खेला और एक रन चुरा लिया। दिशा दिखाई, दूसरा रन बाहर ले डाई। ओए बचे 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 बचे, बच गए भाई। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। लाजवाब शॉट, गेंद डाली स्लॉट में, बल्लेबाज ने उसको पार किया पार्किंग लॉट में। 6 रन। बिल्कुल सही बोले हैं आप, 6 मारे हैं, 6। रिवर्स स्वीप भैया, पर रिवर्स स्वीप खेलते कैसे, ऐसा तो मेरे को ये भी नहीं आता। एक बार ही देखते हैं। हाँ हाँ,
लियो। शानदार कैच, हाँ, मिल तो गई भाई। सफलता। शॉट सिलेक्शन में चूक कर बैठे बल्लेबाज। बड़ी मुझे- सफलता, पूरी टीम उत्साहित होगी इस विकेट के बाद। मुझे लगा कि भाई इस तरीके से खेलूंगा बॉडी के पास में मायूस से होंगे बल्लेबाज, तो क्योंकि चौका आ उनकी जाएगा। पारी में लग चुका है पूर्ण विराम। बट आ चुका है विकेट। मोइन अली ले चुके हैं विकेट। विकेट चली गई है। केएल राहुल, केएल राहुल, केएल राहुल, हाँ बढ़िया, केएल राहुल। कमाल, लाजवाब राहुल। नए बल्लेबाज को ज्यादा स्ट्राइक पर रखने की कोशिश होगी कप्तान की। अच्छा, फ्रंट फुट पे पीछे की तरफ। गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा, गजब का कैच। बल्लेबाज हैरान है ऐसी फील्डिंग देखकर। भाई क्या ही कैच पकड़ रहे थे। और ये इनका मशहूर सेलिब्रेशन, इनके इस अंदाज के तो दर्शक भी दीवाने हैं। पांड्या भैया हमारे चल दिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगातार हेलीकॉप्टर को आउट हो गया भाई। टाइमिंग ही नहीं हुआ। सूर्या भाई, अब आएंगे सूर्या। अब सूर्या को सूर्या वाले शॉट्स दिखाने पड़ेंगे, वरना मजा नहीं आएगा। हेलीकॉप्टर शॉट। पारी की शुरुआत में संभल कर खेलना चाहेंगे बल्लेबाज। हेलीकॉप्टर शॉट की ऐसी तैसी हो गई भैया। शॉट, तगड़ा शॉट, कॉन्फिडेंस से भरपूर। बेहतरीन कवर ड्राइव। जब ये आक्रामक रुख अपनाते हैं, रनों को रोक पाना बहुत मुश्किल लगता है। टाइमिंग ज्यादा अच्छी नहीं। ऐसी वो शॉट देख के बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही दृष्टिकोणों से ये पिच अभी तक काफी बैलेंस लग रही है। बात तो सही कही भैया आपने। शानदार चौका, गेंदबाजों को चौंकाने वाला चौका। क्या डायरेक्शन दिखाई है भाई, मजा ही आ गया। फिर से देखेंगे हमने शॉट को स्लो मोशन में। स्लो मोशन अंग्रेजा, ये लीजिए भाई। इनके आंखों और हाथों का तालमेल लाजवाब है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप आकाश जी। अच्छे बैटिंग रिदम में दिख रहे हैं आज। मैं तो आपसे बहुत छोटा होऊंगा। अरे नहीं, अरे जो भी हो, कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आई शॉट रे, गैप में खेला और एक रन चुरा लिया। बट ये नाम का सीक्रेट बताओ मुझे। ये नाम इसमें ऐसा क्यों? चलो भाई, चलो भाई। अगला शॉट काफी नहीं नहीं एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी। कौन से आए? कौन से वाले से? अच्छा अच्छा ठीक है, ये लगे पड़ा है एकदम। हाँ करो करो, बात करो बाबू, बात करो। स्पिन गेंदबाज को वापस लाया गया है। सत्य गाना अच्छा, नाइस। गैप में खेला और एक रन चुरा लिया। पर एक ही मिलेगा भाई। 6 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं और 67 रन। काफी अनुशासन के साथ हुई है अब तक गेंदबाजी। परिणाम स्वरूप मैच पर अच्छी पकड़ बनाने में सफल रहे हैं। लाजवाब स्ट्रोक है ये। रन तो यहां भी मिलेंगे, 1 2 नहीं पूरे 4 मिलेंगे।
चुका तो एक तरह से मेरी पहचान उठ है नाम। कल्लू मामा। गेंदबाज ऑन रिमांड, चौके छक्के ऑन डिमांड। अरे भाई साहब, ओ भाई ये बेहतर शॉट। महीन सी थी दरार, उसमें से जड़ दिया 4 और ये गेंद गई सीमा रेखा पार। ये है भाई शॉट। बैट पे लगते ही मानो बाउंड्री लिखी हुई थी इस पे। सूर्य वाला शॉट, बिल्कुल सूर्य अच्छे वाला बैटिंग शॉट रिदम में दिख होता रहे है। हैं आज ये। दो रन आसानी से मिल सकते हैं इस टाइम। 2 रन कंप्लीट किए यहाँ पर। और कैसे हो ये लीजिए भाई। 6 रन मिलेंगे। बाजुए खोली और दिखाया अपना जलवा। जबरदस्त शॉट। बढ़िया शॉट। आदिल राशिद को भैया भेज दिया है उसके गांव। बेहतरीन अंदाज में दिख रहे हैं आज ये। एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी। तगड़ा शॉट। बल्लेबाज नाकाम एक होते नंबर हुए शॉट। गैप ढूंढने में। चलो भाई, अब हो चुके हैं मेरे ख्याल से 7 ओवर और हमने बना दिए हैं 85, जो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर तो नहीं कहूँगा, बट अब कहीं ना कहीं लास्ट के 3 ओवर्स में देखना दिलचस्प होगा कि अगली गेंद कहां डालेंगे गेंदबाज। थोड़ा सा अटैकिंग खेलना काफ़ी ज़रूरी है। शॉट, खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। गैप में है और 4 रन बटोरते हुए मज़ेदार। बेखौफ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं अब बल्लेबाज। एरियल रूट चुना है इस बार। वाह, इसे कहते हैं अद्भुत कैच ऑफ द मैच की श्रेणी में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। भाई क्या ही किया। और ये इनका मशहूर सेलिब्रेशन। इनके इस अंदाज के तो दर्शक भी दीवाने हैं। KL राहुल बढ़िया पारी खेल कर आउट होते हुए। बिल्कुल डिफेंड तो भाई कर लेंगे, हम डिफेंड कर लेंगे। ऋषभ पंत अब आएंगे। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल के रहना यारों, ये इम्तिहानों का दौर है। नहीं, हल्की सी थी खता और नहीं खुला खाता। क्या यार। और ये इनका मशहूर सेलिब्रेशन। इनके इस अंदाज के तो दर्शक भी दीवाने हैं। यूनिक शॉट खेलने के चक्कर में भैया घर को चल दिए हैं हमारे बल्लेबाज। चलो भाई, जड्डू भाई बचे हैं अभी हमारे। जड्डू भाई देखते हैं, पता नहीं क्या करके देंगे अभी हमें। चलो भाई, जड्डू भाई ने मार्क कर लिया अपना। बड़े शॉट्स मारने से पहले बल्लेबाज को पिच पर थोड़ा समय बिताना होगा। नहीं, गैप में खेला और 1 रन चुरा लिया। सर जडेजा। लॉन्ग लेग पे फील्डर लगाया है। शायद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद देखने को मिल सकती है।
अरे अरे अरे, चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ गेंदबाज। वो लगाई नहीं, छूट गया मेरे से। गेंदबाज अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद डाल रहे हैं। क्या ये विकेट लेने में सफल होंगे? चलो देखते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का बढ़िया विसल बॉलिंग, गेंद को भेजा है हवाई यात्रा पर। टाइमिंग, एक रन लेने में सफल हुए दोनों खिलाड़ी। टाइमिंग का पूरा खेल। ये ओवर समाप्त। यहाँ पर 8 ओवर भाई, 2 ओवर बचे हैं। पता नहीं कितने रन हम बना पाएंगे यहाँ से। 8 ओवर में 90 रन बना चुके हैं। अब आ चुके हैं जोफ्रा आर्चर। ईशाला ख्वाब नाम दे। डेथ ओवर्स के लिए विकेट्स बचाना काफी महत्वपूर्ण होता है। ना सही बोल रहे हो आकाश भाई आप। अरे शॉट, शानदार शॉट, दिल खुश हो गया इस शॉट को देखकर। सर जडेजा, हाँ वही सॉरी नामदू। चलो भाई अगला शॉट। अरे नहीं, मिल गई विकेट। वाह, किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाड़ी ने। ऐसा लगा मानो बिजली की रफ्तार है इनके पास। टाइमिंग नहीं यार। और ये इनका मशहूर सेलिब्रेशन। इनके इस अंदाज के तो दर्शक भी दीवाने हैं। भाई राइट, हर्षित राणा को लाना पड़ेगा भाई। सर जडेजा गोइंग ऑन। आज बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं गेंदबाज। खतरे की घंटी है बल्लेबाजों के लिए। गैप में खेला है, 2 रन मिल सकते हैं। अच्छा थ्रो फील्डर का, तेज और बिल्कुल ठिकाने पर। यूनिक के चक्कर में ही आउट हो रहे हैं। फालतू पेले जा रहे हैं हम बार बार। गेंद फलक में, नीचे फील्डर उसकी जान हलक में। अच्छा थ्रो फील्डर का, तेज और बिल्कुल ठिकाने पर। हम बनाएंगे 110 तक तो बनाएंगे भाई, 110 तक तो बनाएंगे। बल्लेबाज दर्द में होंगे यहाँ पे। खतरनाक गेंद लगी है सीधा शरीर पर। यार ये लगना चाहिए था यार शॉट। हमें मिनिमम 12 से 15 रन चाहिए इस ओवर में, तभी हम कुछ अच्छा स्कोर दे पाएंगे सामने टीम को। गैप में खेला और 1 रन चुरा लिया। चलो भाई, बढ़िया थ्रो, स्टंप्स के बेहद करीब। 5 बॉल में कितने रन बनाएंगे ये देखना होगा। ओके चलो भाई 6 या 4, 6 या 4। चलो भाई 6। लाजवाब शॉट, गेंद डाली स्लॉट में, बल्लेबाज ने उसको पार किया पार्किंग लॉट में। 6 रन। रॉयल भाई हेलो। इस मौके पे गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी भांप लिया था। क्या हाल है आपकी भाई? जिसने भी लाइव स्ट्रीम को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस,
गलत शॉट सिलेक्शन। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा। पीछे स्लाइस कर रहे थे कहीं ना कहीं। कप्तान ने बढ़िया फील्ड लगाई है और गेंदबाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंदबाजी कर रहे हैं। क्लीन बॉल, गति से मात खा गए और अपना विकेट खो बैठे। अपने पसंदीदा अंदाज से इस सफलता का जश्न मना रहे हैं गेंदबाज। भाई अब कितना स्कोर बनेगा यार? 2 बॉल में एटलीस्ट 4 रन तो चाहिए। 110 तो भाई पहुंचाना है यार, बिना 110 पहुंचाए क्या होगा? अर्शदीप सिंह लेके आते हैं भाई। कम ऑन गाइस, कुछ तो कर दो। अच्छी विकेट मिली है पिछली गेंद पर। क्या एक और सफलता दिला पाएंगे अपनी टीम को? बस कर भाई, कितनी सफलता दिलाएगा? हाँ, ये शॉट बढ़िया भाई। मिलेंगे पूरे 4 रन। आत्मविश्वास और बढ़ेगा इस शॉट से। 110 जरूर हो चुके हैं और आखिरी गेंद में हम कितने रन बनाने वाले ये देखेंगे। पारी की आखिरी गेंद, देखते हैं क्या होता है इस पर। भाई कहाँ मारे इसको, कहाँ मारे? ओके, इसको ठीक है, चलो भाई ट्राई करेंगे नया। हवा में दे मार, गजब का कैच। बल्लेबाज हैरान है ऐसी फील्डिंग देखकर। चलो डिफेंड लाइक टारगेट तो बनी ही गया और यहाँ पे पहली पारी समाप्त हुई। डिफेंड हम कर सकते हैं भाई से यार। ये वाला शॉट चला जाता है यार। एक तो अर्शदीप सिंह था तो टाइमिंग उतना अच्छा होना नहीं था उसका वैसे भी। चलो भाई अब करेंगे बॉलिंग। लेट्स सी कि हम बॉलिंग किस प्रकार से करते हैं। अभी हम लेके आएंगे सबसे पहले जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ज़रूर इम्पोर्टेंट रहता है कि फील्डिंग टीम आज पूरे जोश में दिख रही है। स्टार्ट कैसा देते हैं हम। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए। तेज गेंदबाज को लाया गया है। बहुत तेज गेंदबाज को लाया गया है। क्या ये बहुत तेज गेंदबाज कुछ करेंगे? चलो भाई, तैयार है बल्लेबाज इनिंग्स की पहली गेंद खेलने के लिए। तेजी से पहले रन के लिए दौड़ लगाई, शायद दूसरा रन भी लेना